Friends, the house is open for Q&As. Working. Hi. I actually can't see. LED off करो. LED बंद कर दो. Hello, hello. फेस पे लाइट नहीं है यार. फेस लाइट. Is that off? I'll come back up to answer your questions. Yeah. Siva, you were asking a question? Yeah. Abhay? Hi. Tell us your thoughts, since you're hosting the show. Is it difficult to understand women and why? Any experience that you have had? So we would like to know from you, since you're a celebrity here. I would never claim to understand them. Fall into trouble. They are a mystery, and I think that's part of the attraction, is that they are a mystery, and I think they can be equally baffled with men sometimes, but most times they get us. Whereas, yeah, for us it's a mystery most times. It's been good and bad. हेलो. Thanks. इस टेलीविजन पे शुरुआत के लिए इसी शो को क्यों चुना? इसका फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. 6 औरतें, इनको कैमरे दिए गए हैं. आई थिंक स्पेशली इस वक्त हमारे देश में जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, इसकी अवेयरनेस अभी स्प्रेड हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट इट. दिस इज अ रियली नाइस वे टू लेट पीपल ऑल्सो गेट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वुमन, कि औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ कैसी है, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कल्चरली हम क्या लिमिटेशंस डालते हैं उन पर. आई थिंक अगर जो भी मुद्दे हैं इस वक्त देश में, अगर उनको सीरियसली हम लें, तो हमें औरतों को देखना पड़ेगा मच क्लोजर, गेट टू नो देम बेटर. एंड टेलीविजन इज अ पावरफुल मीडियम. टेलीविजन के थ्रू हम कितने हजारों लोगों के पास पहुंच सकते हैं, लाखों लोगों के पास. एंड सो आई फाउंड इट अट्रैक्टिव. प्लस आई थिंक इसमें एक ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी है. ऐसा नहीं है कि रियलिटी शो है तो कैमरा लगाए हैं सब जगह और उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. इनफैक्ट कैमरे इनको दे दिए गए हैं. इट वॉज देयर चॉइस. दे चोज टू टेक द कैमरा होम, और उन्हीं की चॉइस है क्या वो दिखाना चाहती हैं और क्या नहीं. तो एक डिग्निटी भी है उनमें, एक रिस्पेक्ट है जो प्रोड्यूसरों ने, डायरेक्टर ने इन औरतों को दिया हुआ है. और उन्होंने हमें दिखाया उनकी जिंदगी अपनी, और चूज करके जितना इंटीमेट हो, जितना पर्सनल हो, सब शेयर किया. एंड आई थॉट दैट वाज नाइस. और अभी इस भीड़ में जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं, जैसे फिल्मों में अक्सर होता है जो फॉर्मूला चल गया है तो उसकी फिल्में बनती रहती है, वैसे टेलीविजन में भी वही होता है. तो टू सी समथिंग लाइक दिस आउट ऑफ द बॉक्स, सो आई मीन द रीजंस आर मेनी. Abhay, this is Vinita here. Abhay here. This way. Oh, hi. Hi. I want to congratulate you firstly for doing the show. Oh, thank you. And secondly, I want to ask you this, that, if given a chance, who will be the 3 women in your life of 21st century, as you said, who would be the 3 women whom you will, maybe just guard them under the cameras, or, want to know about their personal lives and what's happening with them? Who will be those 3 women? I want the names. Which 3 women I would give a camera Yes. to? Nice one. Dead or alive? It's a hypothetical question. Okay, we'll stick to alive. Wow, good question. There's quite a few, yeah. Maybe a girlfriend. I will be in that camera, so I would not give it to her. I don't know. I guess I would. Oh. किसी को लगा तो नहीं? Are we all right? Yeah? Okay. Let's carry on. Okay, so I'll quickly answer the question. Hi, Abhay. To your left, here. I haven't answered the question yet. I have to pick those 3 women.
So let's make it my mom, my sister, because I hardly ever see them. I'm a bad son, so I won't be in that camera. Third one I'll struggle, you know? Why not Sonia Gandhi? I think it would be interesting considering all the things that are going on in the country. I imagine having that job. I feel so bad for her. Fine. Abhay. Here. Anji. Yeah, hi. This is Zoya from Delhi. Well, Abhay, which are those qualities of these toughest qualities of women which you are just going to reveal with this show? Can you just get to know that? It's not so much about women having tough qualities. I think we are living in a day and age where we are constantly bombarded, you know, either by issue of some kind of difficulty, either whether monetary or relationship or this and that. They're manifold. It's a nice way to see what makes people choose what they do, why they do what they do, what makes them the person they are. And that's applicable to men and women both. And I think to answer your question in that sense, this is a show relatable to both sexes, or even the third sex. You know. So, in that sense, there's no particular one womanly quality as such. I suppose as men we pick some qualities because we don't understand them. You know, जैसे वो गाने में था कि उनका पर्स में इतने tissues क्यों है? Why do women cry so much? They cry much more than men. Men don't understand it. Why are women more emotional than men? Sometimes they can be more stubborn. But I think a lot of these qualities they pick up because of the life they lead, because of the culture they live in. A woman in India is going to be very different from a woman born and raised in America, just because of the things they face. So there'd be different issues that we find difficult as opposed to ones in India. Well, अबे काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रेलेवेंस छोटे पर्दे पे रियलिटी शोज में आए हैं. आपको लगता है कि आप थोड़ा लेट आए? मेरा कोई प्लान था नहीं, तो लेट होने की बात है ही नहीं. इस वक्त एक शो आया जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने हाँ कह दिया. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शो में जाऊंगा, एक होस्ट बनूंगा टेलीविजन पर. तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट. जब प्रोजेक्ट अच्छा है मैंने हाँ बोल दिया. हाय. अभी सोनम कपूर को समझना कितना डिफिकल्ट है. आपकी को स्टार थी आयशा में और अभी रांझना में थे साथ ही. ओह गॉड, वाओ. सोनम को भी कैमरा दे देते हैं, आप ही समझ लो उसको. एनी कमेंट यू वुड लाइक टू ऑन व्हाट? कितना डिफिकल्ट था सोनम को समझना? I don't see the relevance to this show, but she's not that difficult to understand. She's quite simple. Next question. Hi Abhay, this is Pratham from Bollywood Life. Hi here. Hi. Abhay, you're known for your path-breaking, different kind of cinema. I mean, and this is a radically different show, and now you're becoming part of it as a host. Tell me what thought process has gone into it before taking up this project, and what exactly do you think? What process has actually gone into it? And secondly, do you think that this radical format, as in the voyeurism, and what kind of image, what kind of impact it will have on the society? Well, I think the first part of your question, you partly answered it yourself. I've been attracted to films that aren't necessarily set by a formula or backed up by big banners or anything like that. I've done them because I like the content and I like the fact that they were original in their own way. So obviously when a show like this comes along, and as Ajay was saying that, you know, we've never done something that's very different for us, I automatically find it attractive. Not just because it's different is not the attraction, but the fact that you're going out on a limb. You're letting your creative judgment dictate everything else. Okay, I'm creatively attracted to this, so I want to do this. And then I'll take into account, you know, TRPs and monies and whatnot. But my initial approach is for it to be creative. So that was attractive about this show. It's very honest. It's different from what's out there. It's original. You know, that's why.
The second part of your question was? Impact. What impact would Impact, yeah. We can only hope to have an impact by doing something like this. You know, it's like, I don't know that saying, but it's like if you're too scared of something harming you in life, you don't move out at all, you stop living. You know, just because you're scared to go out there. It's something like that. So here, until you don't put on your TV and see that, until someone doesn't put it out there for you to see, there's going to be no impact. But once you put it out there, like I said, television is a powerful medium. People are definitely going to be either empathizing with someone, or they might be offended by someone, or they might relate their lives to that person. You see all of this. When I saw the little bit that I've seen of the few episodes, I saw things that I could relate to. I saw an incident that happened to me as well. I empathized with someone because I felt bad for her. And I could see that my life struggle compared to some of them was much less than theirs. And so I wanted to complain a little less about what I had to deal with. You know, so those are the kind of things. You said television is a very powerful medium, but it is also a very difficult medium to work in. What challenges did you face as a host on the show? Well, the show's about to start next month, so the challenges are to come. They haven't started yet. And every medium is difficult. I mean, film is difficult, you know. So, yeah, I mean, if you focus on the difficulties, you wouldn't know anything. You know, so I just try and focus on the positives. मेरा सवाल अजय से। हाँ जी। जिन 6 महिलाओं का चयन आपने किया, तो किस आधार पे किया गया था? जब भी हमने औरतों को सिलेक्ट किया या चयन किया, एक चीज हम लोग ध्यान में रख रहे थे कि इस 2013 साल में किस तरह के औरत की छवि हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या उनकी कहानियों में कुछ ऐसे रुख है, ऐसे चौराहे हैं जो कुछ इंसाइट्स थे। तो ये चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा चल रही थी। So a crossroad was very important. What is a crossroad in that particular person's life, and what it can tell, what kind of story it can tell. These are the two things which were important for us. और अभय, नॉर्मली जो देओल्स हैं छोटे पर्दे से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं, तो छोटे पर्दे पे आने से पहले आपने किस तरह का होमवर्क करना पड़ा? I think essentially होमवर्क अब शुरू होगा, क्योंकि शूट हम कल शुरू करने वाले हैं। एक तो 6 महीने भी निकले हैं और उनकी कहानी अब देखकर ही हमने लिखी है स्क्रिप्ट, अभी डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी है। तो एज अ होस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अपने डायलॉग्स याद करके अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएं। और एज अ होस्ट आई हैव टू लिंक द स्टोरीज टुगेदर। एक सूत्रधार कहानी कहता है और फिर अगर उस कहानी में अलग अलग थीम है उनको जोड़ता है। तो अब वो शुरू होने वाला है। हाँ, मेरी फैमिली में से कोई गया नहीं है टेलीविजन पर, बट आई डोंट इवन नो अगर किसी ने अच्छे ऑफर दिए उनको कि एक्साइटिंग शो जैसे ये, अगर आई थिंक ये शो अगर ये मेरे भैया के पास भी जाते वो भी कर लेते आई थिंक, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। सो आई थिंक माई फैमिली इज ओपन टू इट एज लॉन्ग एज द शो इज गुड। बट मेरे दाई जी गए हैं, अब वो भूले हैं। तो आपका क्वेश्चन हाफ रॉन्ग था। Abhay, you have always been doing out-of-the-box performances in films and have had a niche name in the field. Now, when you got the offer to take up this show, did it intimidate you in the beginning? Were you worried about what the consequences will be as far as your work in films is concerned? Because you have to deal with a lot of women who have had problems. So the way you tackle them will also depend upon how the viewers, especially women, are going to react to you in films. Wow, I hadn't thought of that. Don't get this idea. अब वो डर लग रहा है जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो। नहीं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक ये पिछले कुछ जो महीने अभी गए हैं, मुझे ज्यादा फिक्र इन महीनों में थी, क्योंकि यू नो कहाँ जाऊं मैं अभी, कैसी फिल्में करूं, कौन से बैनर के साथ अपने आप को जोड़ूं। जो रेगुलर एक्टर के दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे दिमाग में चल रहे थे। जब ये शो आया मुझे एक मौका मिला किसी और चीज पर फोकस करने की, तो मेरा फोकस चेंज हो गया थोड़ा। जैसे वो फोकस चेंज हुआ, थोड़ी पॉजिटिविटी भी आ गई कि हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप एट अ टाइम सब ठीक हो जाएगा, जो करना तुझे कर ले।
just go on doing what you think you are good at least. तो अगर going against the mainstream is your strength, don't lose that. कि कहीं ना कहीं मैं वो छोड़ रहा था, कि सोच रहा था कि यार mainstream dictat जो है सुन ले तू, कर ले जो सब लोग करते हैं. I was almost at that point. Then this show came. So, and this show also, like you said, जैसे फिल्में मेरी अलग है, ये शो भी दूसरे शो से अलग है. So I think it was the way of existence telling me, no, don't change your thought process. In fact, the more you stick to your plan, better. And Abhay, this question is for Abhay, the actor. For the record, besides Ranjana, which are the other films you're having right now? Ranjana एक special appearance है, और in fact, I guess पूरी मीडिया आई हुई है, तो I'll take this opportunity से कि मैंने अपने खुद की प्रोडक्शन कंप्लीट की है, वो भी कल शूट खत्म हो गया है, एंड मैं उसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, रांझना को लेकर भी एक्साइटेड हूँ. इस वक्त वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, और बाकी सब बातचीत है सर. जैसे फिल्मों में बहुत सेलेक्टिव, इवन शोज में यू आर गोइंग टू बी वेरी सेलेक्टिव. या फॉर श्योर. थैंक यू. अजय जी, आपने शो के लिए सिर्फ फीमेल्स को ही क्यों चुना? आप क्या मानते हैं कि पुरुष के अंदर मिस्टीरियस इस तरह के एलिमेंट्स नहीं? थोड़ा डिफिकल्ट टास्क पहले ले ले, ऐसा सोच रहा था. इजियर वन कैन बी टैकल्ड लेटर. यस, इंटरनेशनली स्पीकिंग इसके सीजन्स बने हैं जहाँ पे दे हैव टेकन मेन एज वेल. सो you know, we will also look forward to a season with men, and that could be very, very different than this. और अबे आप इस शो से जुड़े हैं, तो आप अपने ऊपर किस तरह का प्रेशर या अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं? मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज महसूस कर रहा हूँ इस बात? क्योंकि आप इस शो का होस्ट हूँ. हाँ, शो होस्ट हैं, और ये शो किस तरह से वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसको लेके आपके मन में भी कुछ शंकाएं या आपने अपने आप से सवाल किए? या आई थिंक फिक्र तो रहती है. I mean, वो क्वेश्चंस तो फिल्मों को लेकर भी हैं मेरे दिमाग में, क्या फिल्म वर्क करेगी कि नहीं. तो आई थिंक वो रिपीटेडली कर करके जैसे टेलीविजन एक शो आया है, हाँ ये क्वेश्चन जरूर मेरे दिमाग में आया था कि यार पहला शो तो करे टीवी पर, इसकी सक्सेस होनी ही चाहिए, कि अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो मुझ पर बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट होगा, क्या होगा. एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने को बस यही क्वेश्चन पूछा कि क्या तुझे फॉर्मेट पसंद है, शो पसंद है, क्या ये शो कुछ ऑडियंस को दे रही है, आप चाहे उसको विजडम कहें या एनलाइटनमेंट कहें या रिलेटेबिलिटी कहें, जो भी है, क्या ये शो दे रहा है कि नहीं. और ये शो दे रहा था, तो आई डिड इट फॉर दैट रीजन, कि चाहे हिट हो या ना हो, चाहे मेरा करियर से इम्प्रूव हो या ना हो, जो अगर 2 लोग भी ये शो देखकर चेंज हो जाए ना और अपनी जिंदगी में चेंज करें, वो ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. रियली सीरियसली. अभय जी, मैं मजकूर हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ. आपके बारे में कुछ बातें तय है, जैसे आपको देश दुनिया की खबर होती है, जन सरोकार के मुद्दों पे बोलते रहे, शर्मिला इरवोन के बारे में भी आपने कहा, आप संवेदनशील हैं. इसलिए एक सवाल ये उठता है कि आप जब 6 महिलाओं के ऊपर जब एंकरिंग करेगा, कहीं उनकी कहानियों को देखते हुए आपको गुस्सा आ गया, तब आप क्या करेंगे? सर, मुझे जब गुस्सा आ जाता है तो मैं बोल भी देता हूँ कि मुझे गुस्सा आया, और क्यों आया वो भी बोल देता हूँ मैं. रही शो की बात, मतलब कि वो स्क्रिप्ट तो डायरेक्टर के साथ, स्क्रिप्ट तो राइटर और डायरेक्टर लिखते हैं और वो मुझे देंगे, तो वो पहले से ही रिकॉर्ड किया गया होता है. मैं उनकी कहानी देखूंगा, उनके एपिसोड्स देखूंगा, और फिर डिस्कशन होगा कि हम ऑडियंस को क्या बताएं. एक वक्त पे मैं एक्साइटेड बहुत हो गया था, मैंने बोला कि यार इसका एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि जो इन पे बीत रही है वो सब पे बीतती है, और आई थिंक अगर इनके एनालिसिस करें तो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी लाइक कि हम ऑडियंस की भी एनालिसिस कर रहे हैं, और शायद उनको भी कुछ आंसर्स मिल जाए अपनी जिंदगी के, अपने मुद्दों के. बट दैट वाज एक ये भी था कि ज्यादा क्लिनिकल भी नहीं होना चाहिए. आफ्टर ऑल इट्स नॉट अ साइकोलॉजिस्ट शो आइदर. तो वो सब सोच कर वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है. मुझे शो पर गुस्सा नहीं आएगा किसी चीज पे लेकर, एंड आई डोंट थिंक आई कैन स्पीक ऑफ अदर पीपल ऑन दिस शो. जो औरतें हैं इस शो पर, उन पर फोकस रहना पड़ेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो. मिस्टर Palwanko, although we know Abhay, he's handsome, tall, and very sensuous. He's saying he's also tall and handsome. So, what are the other qualities you just look in Ajay that you have selected him for hosting the show? Okay, I selected Abhay, but
See, Abhay, and I think this answer, your question has been answered by most of the journalists sitting out here. When they talked about how sensitive it is, what kind of different thought process that is brought into films, the way his own input, he's a thinking actor. We needed a person who's not coming and just, although he's giving a lot of credit to all of us, saying that, writer and director are telling and saying the lines, but it's not so. He himself is contributing so much. So that's important for us. We wanted an actor who is a thinking actor. And that's why we thought Abhay is the right fit, and we did not select him. We went after him. Thank you, sir. And Abhay, while understanding women, which qualities you find which qualities you find the most liking and disliking about the women? See, this is where I fall in trouble with my female viewers. I like everything. There's nothing to dislike. What do I like? Women are emotionally stronger than men, I think. Women are also more forgiving. They're also better looking. Dislike, I think sometimes it's just a point of view. I think women just see things, like women see things in a women's perspective and men see from their perspective, and sometimes they just don't match. Dealing with social situations sometimes, or dealing with emotional problems particularly. So I don't think it's something to dislike, but you have to sort of also think like a woman in order to understand a woman. Abhay, I see some women smiling, so I think I must. Abhay, Hi, this is Hum Tum from CNN IP. I wanted to ask you about your live musical Carmen, which releases on June 9th. Could you tell us something about that? चलो सब बातें भी हो जाएंगी. मैं BBC is celebrating 100 years of Bollywood, and they're putting up this show in Bradford, which is going to be a live event, and it's going to be a film shot live over the course of 1 hour. And it's an adaptation of this opera called Carmen. So what they've done is they've taken Carmen, the character, and made her a British Asian girl who wants to be an actress. And I get to play myself. I'm a Bollywood star shooting in Bradford. It's the perfect story to have picked to sort of highlight the heart of Bollywood, because Bollywood is so much about romance, So it's a romantic film. Bollywood is also high drama. It's a very dramatic subject. And when the BBC guys approached me, they were like, would you, we'd be really interested. It's 100 years of Bollywood, and, to have an actual Bollywood actor would be nice. I like the idea, just the fun of it. I mean, it's not something you get a chance to do every day in life. Who can say that I made a film in 1 hour? And also to mark the occasion of 100 years of Bollywood as a celebration. So is it like also your tribute to 100 years of Indian cinema? Yeah, it's not just mine. I'm just participating in something that the BBC is putting together, and it's going to be live on television, and it's going to have a mixed audience. And just it's going to be, I suppose, I don't know what to make of it, and that's why I'm doing it, because I've never done something like this before. To go up on stage and there's cameras and tracks put everywhere, and you're performing and you're singing, and there's a lot of this going on. You can't mess up because it's on TV at that point. So it's exciting. Thank you so much. Thank you. Basically, one last question. Abhay Prabhat from Bollywood and Glamour this side. Left. Oh, hi. My question is that today's relationship are much of the terms and conditions applied kind. Supposedly you are getting associated with a girl or a woman. Every individual looks for a commercial benefit. So how far this truth is, you can just... What? Coming in every relationship is what? Terms and conditions apply kind of relationship. If you want to get associated with a person, she or he will put some terms and conditions before that. And if I am getting this kind of a benefit, I will associate with you. If I am not getting it, I will reject you. So what comment you have to make on this? Where are you meeting these women, yeah? I've never been given a sheet with terms and conditions. I've heard of prenuptials. I don't know about India having them. I don't have them in America. See, the best way I can answer your question is, all relationships are about give and take. You can't have a relationship without giving and taking.
What to give and what to take. Sir, that मैं आपको उस कोने में बताता हूँ. Any further questions, or do we move to group interactions now? I haven't seen the original format, sir. No, I've only seen the one they've made. What is the original format name? It's not in the press release. It's called there. It's in the release. It's called it's called Connected. Original Connected और हमारा Connected हम. All right. Okay. See, we've taken women who come from smaller towns. It's not that they are in Bombay now, but they are from smaller towns. They are from real smaller towns like Meerut. So and away from Meerut as well. So there are people from all over. See, the 6 women that we've picked up they are women who represent multitude or multitude of women across the country. So that's something that was on our minds when we were going through the selection process. Also, then what to set up in a rural background would have its own unique set of problems. Yeah, we did go to we did our research in rural setups also, and there were issues, and not that there were not issues, but they were. I was very happily surprised the way India is changing. In a very, very small village also, women were allowed to shoot themselves. And I was really, really startled. The kind of mind friends that we have sitting here in Bombay, I think they really break up once you start seeing the real India. And in real India is really different. And that's what we intend bringing now. What are these real people? Friends, that brings us to the end of the Q&A, open forum Q&A. We'll move into group interactions now. Abhay will be with us for a relative. अरे काम कर सकते हैं ना, एक चेयर लगा एक चेयर हटा देना. ताकि आपको सेंटर मिल जाए. हाँ. Yeah, I've done it already. Yeah. I'll hear the question and I'll turn to you and answer. Okay. सबसे पहले तो are we rolling? Okay. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि टीवी में डेब्यू करने जा रहे हैं आप. काफी सारे होस्ट ऑलरेडी हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो होस्ट कर चुके हैं. तो क्या लगता है कि कितना टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है बेस्ट होस्ट बनने के लिए? I think कंपटीशन तब होता है जब आप compete करते हैं. मैं compete ही नहीं कर रहा हूँ. मेरी कोशिश यही है कि जो शो मैं कर रहा हूँ उसको मैं अच्छी तरह से करूँ. और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये शो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर शोज. तो आई थिंक कंपटीशन वोंट बी एन इशू अनलेस यू मेक इट एन इशू. मेरा फेवरेट बॉलीवुड होस्ट सलमान. सलमान का एक स्टाइल है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक ऑनेस्टी है जो मुझे अच्छी लगती है. जब आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ऐसा किससे जिसने आपने डिस्कस किया हो? कोई ऐसी आपकी घर की जो कोई लड़की औरत जिससे आपने डिस्कस किया हो? ऐसा कुछ डिस्कस किया नहीं मैंने, क्योंकि जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना मुझे बहुत पसंद आया. और मैं देख सकता था पढ़ के ही कि ये बहुत ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी है, ओरिजिनल है. तो मैंने वहीं पे हाँ कह दिया था ऑलरेडी. एट द मोस्ट मैं घर जाके एक्साइटेडली बोला घर पे कि ये शो आया और आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई थिंक हर औरत को पसंद आएगा ये शो. अच्छा, अभी कहा जाता है कि लड़कियों को समझना काफी मुश्किल होता है. क्या अभी भी ये चीज मानते हैं कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल होता है? कभी कभी. अच्छा, अभी अगर बात की जाए बॉलीवुड एक्ट्रेस की, कोई वैसे 3 एक्ट्रेस के नाम बताइए कि आप उन्हें चाहें कि ये अपने आप को कैमरे में कैद करें ताकि आप उन्हें जान सकें. बॉलीवुड में एक्ट्रेस कोई भी 3 एक्ट्रेस. नो, इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड शो. Actress to carry a camera. Let's say tough question, huh?
How about Rakhi Sawant? Okay. पर वो तो काफी रियलिटी टीवी कर चुकी है ना ऑलरेडी. No, to someone else. Whom you want to see? Whom I want to see. People have seen that. Yeah, whom I want to see. Okay, start again. I think I would give Konkona. I would give Katrina. And I would give one camera to Anushka. Woman through the lens of Abhay. Through the lens of woman. A woman through my lens. Sharply in focus. Can you get mysterious woman which in your life, apart from acting, whom you want to know actually something about her? Lots. Can you just provide 3 reasons for watching this show? 3 reasons for watching the show. 6 women. 9 reasons. That's 1 reason. You want? That's 6 reasons. There you go. I've given you. Okay. Well, I think 1, it's the fact that it's about women. 2, the fact that it's a reality show with all the drama of it's a non-fiction show with the drama of fiction shows. And a 3rd reason would be because I'm hosting it. आपकी इमेज लेडीज में जो है नाइस बॉय की रही है. आपको लगता है कि लेडीज की ज्यादा इंक्वायरी करेंगे तो आपकी इमेज खराब होगी? आप पहले आदमी हो जो मुझे कह रहा है कि अच्छी इमेज है यार. मुझे तो हमेशा लगा मैं बदनाम हूँ. मैं तो अपनी इमेज इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ ये. जिसने भी औरत को समझने की कोशिश किया है आज तक वो नाकाम है. आपको डर नहीं लगता? किसने क्या जिसने भी औरत को समझने की कोशिश की वो नाकाम रहा है. हाँ नाकाम. तो आपको डर नहीं लगता? या आई एम सॉरी, स्पीक फॉर योरसेल्फ. आप अपने लिए बात कीजिए ना. पूरे मैनकाइंड के लिए क्यों कर लिया आपने बात? हम सबका अपने में उड़ा दिया यार. नहीं, एक कामयाबी पाई है लोगों ने. व्हाट मेक्स यू थिंक दे हैवंट? In my family, actually I can't say that about my dad fully, but he does well sometimes for himself. Okay, अब अगर बात की जाए टीवी रियलिटी के तो बहुत सारे शो ऐसे हैं जो हिट पे हिट हुए. लेकिन आपको लगता है ये शो हिट कर पाएगा? I hope so, sir. I hope it's a hit. But वो prediction, I mean, कौन कर सकता है? मेरे पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, फ्यूचर तो देख नहीं सकता मैं. But जैसे मैंने कहा कि बिकॉज इसमें एक इंटेग्रिटी है, एक ऑनेस्टी है, ओरिजिनलिटी है, that's the only thing can hope कि एक क्रेडिबिलिटी आ जाए और उस क्रेडिबिलिटी के साथ होपफुली लोगों को भी पसंद आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा है. Okay, you being a part of big screen, and this is what's the first time you're venturing into. Do you find any differences between a big screen and a small screen, or do you still, I mean, I think small screen has a wider reach, perhaps. I'm not sure if that's true, but I think small screen has a much wider reach. I guess that's a lot of actors are doing television as well, so that they can increase the fan base. Guys, this is going to be one last question now. How was your experience of shooting with the small screen? So far, we've shot the promotional stuff, which has been great, awesome experience. I have a lovely team. And we're going to start banking the episodes now because they had to get the 6 months of footage to start weaving it together. So वो अभी शुरू होने वाला है. कल से शूट शुरू होने वाला है मेरा. It's going to be hectic, I'm sure. I mean, you just mentioned that you wrapped up your production eventually. You'd like to know a bit about that. Yes, I would like to say that I've also finished my film, my first production, 1/2. कल ही शूट की, कल ही finish किया हमने. And what can I say right now? The good news is that I've actually finished the shooting. It's one step closer to release. Are you more excited or a bit nervous about the show? बेटो बहुत यार, सब होता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा नर्वसनेस भी है. एक्साइटमेंट क्योंकि एक नया वेंचर है, नया प्रोजेक्ट है. नर्वसनेस ये है कि होपफुली लोगों को भी पसंद है और मैं कर पाऊँ अच्छा काम. तो दोनों चीजें होती हैं. Thank you guys.